Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself Dr. Sanjay Singh, Biology teacher, Shivbrat Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I discussed detail about the general introduction of the C4 pathway as well as cranch anatomy of the leaves. In the second segment of the C4 pathway, second segment of the video of the C4 pathway is mechanism of C4 pathway. So today now we are going to discuss the mechanism of C4 pathway. In previous lectures, I told you detail in the leaves having two important regions are found. That the first region is known as mesophyll tissue, and another important regions found in the C4 plant, that is known as bundle sheath. The mesophyll tissue with granule chloroplast, and bundle sheath with agranule chloroplast, without granule chloroplast. हमने प्रीवियस लेक्चर में बात बताया था कि mesophyll टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर C4 पाथवे. मैंने कहा बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस इनसाइड द लीव्स, so therefore the special type of enzymes they are located on the mesophyll tissue. With the help of this enzyme, carbon dioxide fixation takes place. So this type of method is known as alternative method of carbon dioxide fixation. So now we will discuss detail about the mechanism of C4 pathway with the help of diagrammatic representation. Here are the two important regions. The upper is known as bundle sheath, mesophyll tissues. The two important regions present in ears. Here is the mesophyll tissue, and next is the bundle sheath. And here the connecting points is known as plasmodesmata. In here, carbon dioxide when enter in here the carbon dioxide first of all interact with H2O के साथ interact होती है with the help of enzymes carbonic anhydrase. They converted into carbonic acid H2CO3. The H2CO3 again dissociates into H plus ion and bicarbonate ions, and these bicarbonate ions interact with this bicarbonate ions. Here is the p-phosphoenol pyruvic acids plus HCO3 minus in here, and both ये जब इंटरैक्ट होते हैं टू फॉर्म oxaloacetic acid. Here is the OAA having 4 carbon compound. Here is the 3 carbon compounds. Here is the 1 carbon compounds. After that a reaction takes place in here. यहाँ पर reductions होंगे. Here NADH2
NADH2 or oxidized in the form NADPH2 PH2 or oxidized in the form of NADP, then converted into malic acid. Malic acid, here is the 4 carbon compounds, here is the malic acid, and this malic acid transport in here inside the bundle sheath regions. Here is the malic acid having 4 carbon compounds. By the process of decarboxylation, here is the removal of carbon dioxides, then converted into pyruvates, having 3 carbon compounds, and then pyruvates again enter in here, and then here ATP or breakdown ATP, they are converted into ADP, the pyruvate converted to phosphoenol pyruvic acid having 3 carbon compounds, and this CO2 linked with RuBP, then converted into PGA, phosphoglyceric acids, and then convert into PGAL, and the PGL synthesize glucose or carbohydrate. तो दिस पाथवे इज नोन एज, ये कौन सा पाथवे होगा, एंड दिस पाथवे इज नोन एज C3 pathways. तो हियर इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट्स एंड हियर इज द सेकेंड कंपार्टमेंट. अब इसी को डायग्रामेटिकली बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे completed in 2 important regions of leaf. The first is a reaction in mesophyll tissue. A reaction in mesophyll tissue. Here is the mesophyll tissue. The 2 important reaction takes place in here. First of all, आप ये देख सकते हो, here is the very simpler diagrams mentioned in here. When the carbon dioxide enter inside the leaf through stomata, then CO2 combined with H2O to form a carbonic acid. Carbonic acids are again dissociated with H plus ion and bicarbonate ions में डिसोसिएट हो जाती है, एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन कंबाइंड विथ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड्स में कंबाइंड होती है, देन कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो यहाँ हम सिंपल वे में समझाएं तो फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स. व्हेन आप सिंपल वे में समझे कार्बन डाइऑक्साइड interact with PEPA, phosphoenol pyruvic acid, and then converted into OAA having 4 carbon compound that is known as oxaloacetate or oxaloacetic acid. Both are the same. The name of the enzyme PEP carboxylase. This is the name of the enzymes involved in this process. आप देखो here the 1 carbons and here is the 3 carbons, and here the phosphoenol pyruvic acid, they are present on the stroma sides of the chloroplast. They interact with carbon dioxide at low concentration. मैंने कहा the PEP carboxylase enzymes have a affinity to bind to fix कार्बन डाइऑक्साइड एट लो कंसंट्रेशन पर भी उसको कन्वर्ट कर देता है, दैट इज नोन एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. आफ्टर दैट द सेकेंड रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन. यहाँ पर रिडक्शन हो रहे हैं, तो रिडक्शंस में आप क्या देख रहे हो, हियर इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स
are reduced and the NADPH2 or oxidized, ये oxidized होगा, then converted into malic acid plus NADP. Here is the reduced form, and here is the oxidized form, and here is the oxidized, and here is the reduced. With the help of enzymes dehydrogenase. This is the name of the enzyme. Here the reduction reaction takes place by which malic acids are produced having 4 carbon compound. Here is the malic acid. After that, this malic acid transfer into the bundle sheath region through plasmodesmata. Plasmodesmata is what? Plasmodesmata is the connecting points from where the molecules or ions they can move from one compartment to another compartment or one cell to another cell. So second reaction in bundle sheath regions. A reaction in bundle sheath region. Bundle sheath. The first CO2 fixation यहाँ पर हुआ and the second CO2 fixation inside the bundle sheath. In the bundle sheath region, 2 important reaction takes place in here. The first is what? Decarboxylation. The first reaction is known as decarboxylation. तो decarboxylation में क्या हो रहा है? And here is the malic acids released, क्या converted into pyruvates as well as released carbon dioxide with the help of enzyme malate decarboxylase. And the name of the enzyme is what? Decarboxylase. This is the name of the enzymes involved in here for removal of carbon dioxide from the malic acid, then converted into 3 carbon compound, that is known as pyruvate as well as carbon dioxide. So therefore the increase the concentration, जब ये रिलीज होता है तो ये क्या करेगा? इसके क्या होगा? increase the concentration of carbon dioxide inside the bundle sheath. After that क्या हो जाएंगे? Robisco enzymes bind with carbon dioxide to start C3 pathway. This is the second step. Second is what? Second CO2 fixation. The first CO2 fixation in mesophyll tissue and the second CO2 fixation in bundle sheath, और इसी को हम बोल सकते हो C3 pathway. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद RuBP. हियर इज द RuBP. ये इसके साथ कंबाइंड हो रही है एंड दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्ट होगी PGA एंड द PGA दे आर कन्वर्टेड इनटू PGAl एंड द PGAl सिंथेसाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर दैट इज नोन एज फूड में सिंथेसाइज हो रहा है. तो दिस पाथवे इज नोन एज C3 pathway. I discussed detail in previous lectures. So here the two important reaction takes place in the bundle sheath regions. After that the जो pyruvates होती है, pyruvates again enter into the mesophyll tissue and this pyruvate again phosphorylated, ये phosphorylated होती है and here is the ATP molecules are break down into ADP and then converted into phosphoenol pyruvic acid. जो आपको शुरुआत जहाँ से हुआ वहीं पर फिर वो कन्वर्जन हो रहा है. तो here the very simple diagrams. With the help of this diagrammatic representation, I discuss detail about the mechanism of C4 pathway inside the C4 plants. तो आपने देखा कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हुआ. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 combined with EPA, then converted into oxaloacetate, then again converted into malic acids,
with the help of reduction process, and this malic acid enter into the bundle sheath region where Rubisco enzymes are present, वहाँ पर present होती है, and here decarboxylation reaction takes place. Due to this, increase the concentration of carbon dioxide inside the bundle sheath region. So therefore, Rubisco enzymes bind with carbon dioxide to start C3 pathways or Calvin cycle. After that, सिंथेसाइज द ग्लूकोज मालिक्यूल मीन्स खाना यहाँ पर भी बना, खाना वहाँ पर भी बनता है, वहाँ डायरेक्टली वहाँ पर कैल्विन साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ पर भी कैल्विन साइकिल आपको स्टार्ट हुआ, बट वो डायरेक्टली बिकॉज द इनिशियल स्टेज में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स आर वेरी वेरी लिमिटेड. सो रुबिस्को एंजाइम्स नेवर वर्क for CO2 fixation at low concentration of carbon dioxide. The Rubisco enzymes only work for CO2 fixation at high concentration of carbon dioxide. तो पहले उसका concentration बढ़ाया गया, इसके बाद वो Rubisco enzymes उस पर act किया and then start C3 pathway. And last is the what is the significance or what is the importance of C4 pathways. Importance of C4 pathways. The first important points, it evolved in arid conditions. Evolved in arid plant to maintain the efficiency of photosynthesis under adverse condition. This is the first important point. It's involved in arid conditions. Arid condition, आप condition भी इसको बोल सकते हो, arid condition to maintain the efficiency of photosynthesis. मतलब जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी क्या करता है, photosynthesis की efficiency को बढ़ा देता है. This is the very important property or importance. It is faster process of photosynthesis in comparison to the C3 pathway photosynthesis. It is the faster process of photosynthesis. And another important property, it can tolerates under saline condition because क्यों ऐसा हो जाता है, because contains oxaloacetic acid and malic acid. This is the another important property of this plant. Tolerates under saline condition because contains oxaloacetic and malic acid. Saline condition जहाँ salty ज़्यादा होता है. In general, most of the plants are die due to high saline condition, पर वो survive नहीं करते हैं because this plant are easily survive in the saline condition because it contains acidic property वहाँ पर रहती है, उसको neutralize कर देता है. This is the important property of the no photorespiration, and the another important property, no photorespiration takes place. No photorespiration takes place. फोटो रिस्पिरेशन क्या आगे के हम वीडियो में डिस्कस डिटेल करेंगे. फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है? इफ द रुबिस्को एंजाइम्स बाइंड विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू स्टार्ट फोटो रिस्पिरेशन. हम डिटेल में वहाँ पर बात करूँगा, बट इन ईयर यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लो होता है, एट दिस टाइम द अनदर एंजाइम प्रेजेंट इन द C4 प्लांट दैट इज नोन एज PEP कार्बोक्सिलेज, वो उससे बाइंड कर लेता है. इसलिए
रुबिस्को को बाइंड होने का कभी चांस ही नहीं मिल पाता, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन आर टोटली एब्सेंट इन द C4 प्लांट। हियर इज द फोर इम्पॉर्टेंस ऑफ द C4 पाथवे। इट मीन्स पहला हमने जो बात बताया, इट इन्वॉल्व इन एरिड कंडीशन, मतलब जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर मेंटेन करता है फॉर द इफिशियंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ मोर बायोमास इससे होगा। इट इज फास्टर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इट कैन टॉलरेट अंडर सलाइन कंडीशन बिकॉज कंटेन्स ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एज वेल एज मैलिक एसिड। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर C3 प्लांट और C4 प्लांट को दोनों को ले लिया जाए तो किस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप सीधे एक लाइन में बताने का कि C4 प्लांट आर मोर एडवांस प्लांट फॉर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये आप देख सकते हो इट इज़ द फास्टर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज it evolved to maintain the efficiency of photosynthesis in adverse condition। विपरीत परिस्थितियों में भी वह फूड को बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो C4 plants are very very important plant। They are easily adopted in the tropical condition of the environment। तो this topics are very very important for examination point of view as well as competition point of view। So thank you for watching this video. Have a nice day all of you।